अपने बाजू वाले में कितने आए? 40 में से बता टॉपर है। इंग्लिश में इतना सब कुछ इंग्लिश आसान है, इंग्लिश हो जाएगा। मैं भी है और मैंने इसकी इतने चैप्टर है, 12 चैप्टर। ग्रामर तो आसान है, वो फर्स्ट चैप्टर ना, फर्स्ट हाउ आई डोंट नो ग्रामर वो सोलिटरी रीपर है। व्हाट इज दिस? CBSE पढ़ने का दोनों से भी आई कार्ड भरा, आई कार्ड है ना, आई कार्ड घाला आहे बॅग मध्ये आहे, बॅग मध्ये काय करायचं? सगळं ठेवलंय बॅग मध्ये। हो का बरं? आज ऑनलाइन क्लास था। किस चीज में? को नहीं था स्कूल हट फिर हमने नहीं दिया पूरा। ये तो अंदर बैठे जैसे बैठी है, किधर बैठी मैं कितना बोला। अच्छा मैं कौन खाने ओए खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब बस मशीन का को अच्छा नहीं लगता वही हम वो बड़ी ना सब मुर्गा खा लो। टिश्यूज तो बस स्नैप टिश्यूज आ रहे हैं वो हम लोग को भी। अरे इसलिए सामने आता तो नहीं एग्जाम कब से चालू है? 15 से। ओ वाओ तेरा बहुत पास है यार। तेरा क्या होगा? मैं जैसे फेल हो रही तो ये इधर का टेस्ट इधर भी उधर इधर फेल हो गए तो क्या होगा? सिलेबस आ गया किसका? फाइनल का सिलेबस नहीं मिला। फाइनल का बता के रख दिया। हां फिर 15 एग्जाम हां कब का दे दिया? कुछ नहीं एग्जाम भाई पूरा जो मतलब आधे सब्जेक्ट्स में जो लास्ट पीटी में था ना वो प्लस 9 चैप्टर्स। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ तेरा क्या होगा? तेरा हमने एग्जाम दिया तो वैसे ही अरे फाइनल स्कूल का हाफ ईयर के बारे में हेलो मैम देखो आपको ये जल्दी नहीं आता, हम लोग ही हम 8 बजे। हां तुम्हारे ऑनलाइन क्लास वो शावरा वो प्रीशा स्टार्ट मैं हैव इट 3। अच्छा तू 3 से आगे बैठी है। मुझे लगा मुझे जल्दी नहीं आती कभी। मुझे लगा रोज केमिस्ट्री के लेक्चर में रेट करके मैंने तो सोचा होगा कि हां सबसे पहले जाके पढ़ना। हम तो अलग पीडीएफ आ रही है संडे को है वही तो सैटरडे को मेरी स्कूल की पीडीएफ मेरे को और किसी से फर्क नहीं होता बाकी तो फिर जो मैथ्स में मेरे दोनों दिन गए ठीक ठाक भी मैथ्स की तैयारी है। बिल्कुल मैथ्स को ट्राई कर रहा है। हां और देख पर क्या पढ़ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं बातें रिलेट करके आप ज्यादा कुछ मत बोलो। मेरे को फुल आए थे केमिस्ट्री आप रहोगे मां मेरे को फुल आए थे मेरे को भी केमिस्ट्री में फुल आया मेरा बस गया हां मेरा भी अच्छा वो जो भी कन्वर्सेशन होगा इट विल नॉट बी रिलेटेड विद योर स्कूल मार्क्स, इट विल बी रिलेटेड विद योर यूटी मार्क्स। यूटी में आपका जो टेस्ट वगैरह हो गया है ना उसका डिस्कशन ओह हां केमिस्ट्री में अच्छी है यूटी की टेस्ट सीरीज। हां ओके तो आ जाओ आपको जरूर आना यूटी की टेस्ट सीरीज वी आर देयर फॉर। हां ये यूटी की टेस्ट सीरीज में तो मैथ्स में तो अच्छा आ जाता है। हां मतलब अच्छा मेरे को भी स्कूल के बारे में लगा चिंता तो चिंता वो जब आके जो बात करेंगे उसका आंसर देने का चिंता। अरे बाबा इट इज रेनिंग सो हैवीली और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ फिर बीमार होके बैठ जाओगे घर पे। आप कंप्लेन कर दो है ना? मेरे को पता है उसकी मम्मी को पता है बीमार हो जाएगी तो मम्मी पहले खुद ही बता देगी ये सब लड़की ऐसा खा रही है पी रही है। नहीं बारिश है ना इसलिए नहीं तो चल जाता है और अच्छा लग रहा था वो
बारिश में मुझे तो ऐसा लगा था कि बारिश में इंस्टेड ऑफ हैविंग आइसक्रीम एंड ऑल मतलब ठंडा लेने से अच्छा कुछ गरम 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 वड़ा पाव खाते भजिया खाते याद में पार्टी देनी पड़ेगी पार्टी को भी आपने नाम लिया ना अभी ओके चलो आ जाओ अभी एक बचा यहाँ से वन फ्रॉम हियर एंड वन टू फ्रॉम हियर ना गर्ल्स राजसी नहीं है उसके भाई को मैंने पूछा था वो आ रही है करके क्या पता अच्छा चलो राजसी चलो now we are that all discussion we will start with the symbols again so what is meaning of symbols and for what purpose they are used जब पहले वाले जमाने में हाँ बोलोगी नहीं बोलोगी 500 BC हाँ 500 BC में जब ये एफसी वो सब नहीं होता था तो इससे अलग-अलग एलिमेंट्स को सिंबल के वे में रिप्रेजेंट ओके और वो उसको सिंबल के वे में रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए करते थे क्योंकि शिपिंग का शायद मे बी shipping is not mentioned here हाँ shipping और anyhow we need to take help of the shipping आपने यही बोला हाँ shipping के वक्त जो बॉक्सेस थे उसके अंदर जो है इसलिए वो स्टिकर के वे से अच्छा अभी देखो 500 BC बोल रहे हो शिपिंग तक भी वो पहुंच गई पता नहीं तब शिपिंग होगा मैंने शिपिंग वाला एग्जांपल नहीं बोला सीलिंग हाँ शिपिंग वाला नहीं बोला था मैंने एग्जांपल शिपिंग तो मतलब इतना भी 500 BC में शिपिंग कहाँ होता रहेगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब ऐसा नॉर्मल एक्सचेंज रहेगा उनका ओके बट वेदर दिस सिंबल्स इज हेल्पिंग अस सिंबल सिस्टम इट इज हेल्पिंग अस तो उनको भी उन्होंने हेल्प किया रहेगा ना राइट ना बिकॉज इट रिड्यूसेस द टाइम लिखने वाला पढ़ने वाला विद दैट सिंबल ओनली वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच एलिमेंट इज दैट okay but this thing was not work with all the element and they have given symbol according to either origin or the color ये दो चीजें मैंने बताई थी बराबर है ना either origin or the color so for that I think copper example was given and gold right now copper and gold cuprous and yellow color these two examples were given then after that जैसे मैंने बताया ये दो वाला but all were not completely applicable for all the elements afterwards they started with the IUPAC system so what is that full name or full form of IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. Now this system, even now this system is used to name the compounds. केमिकल वाले कोई भी कंपाउंड्स रहेंगे तो नाम उसके लिए रखने के लिए दिस इज यूज बट अगेन वहाँ पे कंपाउंड तो उनके लिए बहुत बड़ी लंबी बात थी दे वर स्ट्रगलिंग विद फाइंडिंग नेमिंग न्यू एटम्स ओनली बराबर है ना तो फिर whatever atom they used to get ना immediately by using some verification or something they used to give the name but before going to this particular system और एक term वहाँ पे आता है और एक method आता है to name the compound either by three things are given here I think by name of the country either Latin Greek or German ये एक चीज है उसके अंदर Latin Greek or German now one by one you will see the example in that example many changes are there you are familiar with all those example आप बीच में पूछोगे ये ऐसा है तो उसका नाम वैसे क्यों रखा है but you will get answer in this explanation only so let us start with the examples first one is a hydrogen लिखो example हाँ लिखना है और वो आपको सारे एग्जाम्पल याद भी करने हैं आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू रूल्स फॉर राइटिंग द सिंबल बट दे विल आस्क यू द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बिकॉज हियर आफ्टर वी हैव टू डील विद द राइटिंग फॉर्मूलास ऑफ द कंपाउंड तो उसके लिए आपको सिंबल्स आने चाहिए फर्स्ट अच्छा वो लिखा है आपने ये वाला टेबल बनाया है this part done it is okay तो फटाफट first one एक बार discuss करते हैं then we will go for that part the first one is a hydrogen symbol is capital H now as for this IUPAC whichever is the first alphabet that we have to write in the capital letter तो hydrogen हमने first डाल दिया second is aluminium now symbol of aluminium is capital A or small L here we have selected
two alphabet, first word capital, second word small. So it was like that के दो alphabet ही देने हैं, always the first one capital, second one the small. Then cobalt, CO. This C is capital, O is small. If we write CO, तो ये क्या हो जाएगा? This CO carbon monoxide. So again there is a difference. Cobalt, it is CO, C capital, O small. Okay, and carbon monoxide is C and O. Both alphabets are capital alphabet. Okay. Then after that, the next one here it is given. Symbol of some elements are formed from the first letter name and the letter appearing. हाँ ओके क्या and the letter appearing later in the name. For example, chlorine. अभी chlorine का spelling it is CHLORINE. इससे पहले the example which we have taken, we have considered only first two alphabets. फर्स्ट टू ही कंसीडर किया है, बट क्लोरीन में इंस्टेड ऑफ टेकिंग H क्या लिया है? L, Cl, then again in zinc Zn. Okay, so these are the example which you have to remember. Zi करके आगे मत जाना, it is Zn. Similarly chlorine, many times we have taken example of chlorine. Even in formation of NaCl हमने क्लोरीन किया था, हमने क्या लिखा था? Cl. Okay, then जो अदर सिंबल्स है, हाँ, फिर ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज इट इज अ कंपाउंड C6H12O6. It is complete C6H12O6. ग्लूकोज के अंदर there is carbon, hydrogen as well as oxygen atom. Okay, this is a complete compound. These atoms they come together in proper proportion to make this compound. समझ में आया? यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? We are discussing only the atoms. बराबर है ना? एटम्स का सिंबल कैसे लिखना है? ये क्या है? कंपाउंड का इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. There is a difference. For example, if I am saying sodium chloride, अभी आपको पता है सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है? बराबर है ना? If I say hydrochloric acid, HCl. Understood the difference? वैसे तुम्हारे दिमाग में भी ग्लूकोज क्यों आ गया? अरे वो स्कूल में हमने एक बार बोला था और लिखने बोला था और मैम ने बोला था ये आ सकता है एमसीक्यू में. हाँ तो ये आ सकता है क्योंकि एक ग्लूकोज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलाना है. एवरीवेयर यू विल फाइंड ग्लूकोज. 11th स्टैंडर्ड में आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. ग्लूकोज के एग्जांपल बहुत सारे कॉमन है, बहुत. 12th स्टैंडर्ड में भी मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स के कितने हैं 3 टॉपिक्स आते हैं, बट एक तो ग्लूकोज का, ग्लूकोज एंड यूरिया, ये 2 एग्जांपल्स अभी यहाँ पे रहते हैं. ये वाला भी पॉइंट हो गया. अदर सिंबल्स विद द लैटिन, ग्रीक, जर्मन वो सब हो गया. सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग. सोडियम वाला, सोडियम इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिखा है नहीं सिंबल है बट व्हाट इज लिखा उसमें नहीं. आप लोगों ने लिखा है क्या? नहीं, ऐसे कैसे टेबल लिखा रही है? नहीं लिखा. ओके, राइट डाउन. Fe, हाँ अच्छा उतना ही लिखा है. अदर सिंबल्स और क्लोरीन से मम्मी सिंबल्स एलिमेंट्स वाला बनाया है और फिर ये बनाया है, इतना ही किया है. तो ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं हो गया क्या? यहाँ पे आपका ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ लिख के हाइड्रोजन क्लोरीन से. पता लेकिन ये टेबल लिखा है. व्हाट्स एन एटम लिखा है. जम कैसे क्या हो गया डायरेक्टली एग्जांपल्स में? ओके, राइट डाउन एग्जांपल्स. हाइड्रोजन फॉर्मूला लिख के नाम लिखो एंड देन यू राइट डाउन फॉर्मूला. उधर से कॉपी मत मारना. हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, क्लोरीन, जिंक. Okay, this all names are from IUPAC system. Then from the source name
फर्स्ट वन आयन का फॉर्मूला सॉरी सिंबल इट इज Fe, आयन का पूरा कर लो Fe, एंड लैटिन नेम इज फेरम, FERRUM, FERRUM, फेरम। बेटा अटेंडेंस पास करो, who is having that sheet? हाँ, then next one sodium Na, and capital A small Na, and from natrium NATRIUM, हो गया natrium। then next one potassium symbol is K, modern day symbol is K, okay, K, and it is from kalium, KALIUM। हो गया। नाउ यू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट। कहाँ तक आ गए? कोबाल्ट, आफ्टर कोबाल्ट क्लोरीन, जिंक, ये पूरे करो, राइट द सिंबल्स, जिंक, देन सोडियम, आयन, लिख पहले आयन, सोडियम एंड पोटेशियम। सिंबल्स लिखो, मैंने आपको लैटिन ग्रीक नेम वो सब बताया, राइट डाउन मॉडर्न डे सिंबल्स ही लिखने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हो गया ना। ये डाल्टन यूज देम, इसको अच्छा तो ऐसा करो, उसको ऊपर वाला कर, एंड दिस ऑल आर मॉडर्न डे सिंबल्स। उधर है ना मॉडर्न डे सिंबल, हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हेडिंग डालो, हाँ, एटॉमिक मास। हो गया, पीछे भी नहीं, एक सेकंड पीछे नहीं, चलो करेंगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। ओके, द एटॉमिक मास। at present we are using two terms, first term is A and second term is Z. This together if we place with X, it is a representation of any element X. What is A here? Mass number. Z is atomic number, बराबर है ना। Then again we have defined Z as well as A. This also we have done on the structure of atom. So how you will define A and Z? हाँ, it is a symbol of any element, कोई भी element ले लो। For example if you are going with carbon, what is symbol of carbon? C। समझ में आ गया। अभी C के लिए एटॉमिक मास और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना आता है वो हमको पूरा करना है। ओके, ये फॉर एग्जांपल यू टेक एनी एलिमेंट, represent it by alphabet X. Okay, so how to define A and Z, ये मुझे पहले बता दो, फिर मैं आपको फिर से 500 BC में लेके जाती हूँ। At present A is what? Sum of protons and neutrons. Okay, then Z only proton, and this number it is equal to E, number of electron, बराबर है ना। क्योंकि अभी हमने बहुत पढ़ लिया, हमको मालूम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दिस आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नंबर एटॉमिक नंबर इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नंबर इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, and this is a reason why atom it is neutral. But when it's come to atomic mass number, then it is sum of proton and neutron which are present inside the nucleus of an atom. अब मुझे ये बताओ, ये जो हम फटाफट जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो हमको मालूम है अबाउट प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उस समय in 500 it was so easy. What do you think? Normal symbols भी हम लोग दे रहे, for example if you are going with this symbols,
they are not so easy to remember. तो complicated कुछ नहीं है, but nowadays we are using the normal one. बराबर है ना? Alphabetically we are giving the representation rather than making this circus and wasting our time. बराबर है? Dalton he gave theory of atomic model. Okay. Now one more thing I would like to tell you, that when you will study periodic table, you will not directly jump on that particular periodic table. जो भी कुछ है, जैसे हमने structure of atom में we have taken so many theories and after that Rutherford theory, Bohr's theory, उसके बाद में कुछ generalization किया था हमने कि okay these are the things, atomic number, mass number, isotopes, isobar. It was not directly jumping on Rutherford and Bohr's theory. ऐसा था? किस तरीके का था? नहीं था. पहले बहुत सारे theories थे. So due to some drawback, we went for the next one. Due to some drawbacks, we went for the next one. Same like that, when you will start with the periodic table, you have to study which table. Before the modern periodic table, many other methods were also given to classify the element. Okay, then all you have to learn and then you will go. Now at present we know, I don't know whether you know or not, क्योंकि periodic table शायद ही आपका हुआ रहेगा, that periodic table elements are arranged in the increasing order of the atomic number. हुआ है आपका periodic table? तो जो elements है ना, बेटा लगा दो, ऑन करो क्रोम से periodic table. कौन है? ऊपर प्लस वाला है ना, वो लगा दो. हाँ, बाकी सबको वहां पे देखने की जरूरत नहीं है. तो periodic table, it is formed, it is arranged in the increasing order of the atomic number. Periodic table. वो देखो रहेगा, मैंने पहले ही बताया था एक बार. एक अच्छा वाला इमेज को जूम कर दो, कलरफुल वाला. हाँ करेक्ट, अरे करेक्ट, अरे भाई जूम करना, नीचे वाला ब्लैक वाला देख. अरे अब नीचे ना. हाँ वेरी गुड, बस. अब ओपन इमेज. ओके ओके, बस 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 हो गया, इतना काफी है. ये देखो 13 14 15 16 17 18 हॉरिजॉन्टली दे आर प्लेस्ड. आपको क्लोरीन का पता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था हमने वैलेंसी के लिए. आर्गन का पता है, बराबर है ना? तो इन शॉर्ट दिस एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर. एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं दिख रहा है, इधर तो सामने आ जाओ ना, अदरवाइज देखो 13 14 15 16 17 18. ये मैं 20 तक के एग्जांपल आपको इसलिए बता रही हूँ because we have worked out till 20 right now. If you see here 11 12 13 14 15 16 17 18, so these are the atomic number and periodic table is formed on the basis of increase in the atomic number. ये periodic table के लिए. लेकिन one full stop, लेकिन इसके पहले जितने भी क्लासिफिकेशन हो गए, जितने भी, all classification were completely based on atomic mass number. Done? Atomic mass number. So do you think whether Dalton has worked on atomic number in that particular era when atom and molecule, atom and elements, उनको वो भी डिस्टिंग्विश करने नहीं आ रहा था, तो वो किसके ऊपर, जो एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने बनाई थी, इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास. In your module on page number 41 it is given Dalton's atomic theory propose the atomic mass. मिला आपको? It is the first sentence, last paragraph, first sentence. Underline करो, and if you want you can note it down in your book. It was based on, proposed on the basis of atomic mass. नंबर की तरफ हमको नहीं जाना है. हाँ, हम लोग कौन से बीसी में है? 500. Okay. Now, according to him, whatever the properties of that particular element was showing, okay, those properties were only because of atomic mass.
जो भी बता रहा है प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट रैंडमली जो उन्होंने निकाला था ढूंढ के, जो भी कोई एलिमेंट है उनके जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अभी ये एक चीज हो गया। अभी व्हेन वी आर सेइंग दैट ये भी पहचान नहीं पा रहे थे वेदर इट इज एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड, ये भी जब पहचान नहीं पा रहे थे तो अब मुझे एक बात बताओ, उस समय एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना, it would have been easy or difficult? Of course difficult, क्योंकि वो तो easy कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, वर्कआउट कैसे करना है। सो फाइंडिंग द एटॉमिक मास इन दैट टाइम इट वाज नॉट एट ऑल इजी। सो हाउ दे यूज्ड टू वर्क, दे यूज्ड टू फाइंड आउट द रेशियो कि भाई हाइड्रोजन, if for example if we are preparing water molecule in that particular era, then how many how many hydrogen molecules are required, how many oxygen atom molecules are required, and from that ratio they used to calculate the atomic mass of that compound, that element, that atom. ये थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, बट तब कैसे कैलकुलेट कर रहे थे उसके रेफरेंस से आगे आगे कैसे गए वो हमको देखना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इट वाज बेस्ड ऑन atomic mass. Calculation of atomic mass or finding the atomic mass, it was easy. According to Dalton theory, all properties of the element are only due to atomic mass. जो भी कुछ है, जो भी कुछ किया घरा, जो भी किया है वो एटम ने, वो क्यों कर रहा है वो सब, only because of atomic mass. हाँ, दूसरा कुछ नहीं। तुमने अच्छे मार्क्स निकाले, एटॉमिक मास, बुरे निकाले, एटॉमिक मार्क्स, रिएक्शन किया, एटॉमिक मार्क्स, विजिबल हो, एटॉमिक मार्क्स, नहीं विजिबल हो, एटॉमिक मार्क्स, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एटॉमिक मार्क्स, हर चीज में एटॉमिक मास ही, बिकॉज दे डोंट हैव आइडिया ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये कंसेप्ट उनके दिमाग में क्लियर नहीं था। Calculation of atomic mass, it was not at all easy. So other way they tried with the coefficient. For example, मैंने बताया ना, वाटर को अगर प्रिपेयर करना है तो हाइड्रोजन गैस कितना लगेगा, ऑक्सीजन कितना लगेगा, एंड फ्रॉम दैट रेशियो दे यूज्ड टू कैलकुलेट एटॉमिक मासेस। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, क्विकली राइट डाउन दैट एग्जांपल। ये डाल्टन वाला चीज इट इज क्लियर ना? Along with that, supporting two statements are there. First is law of constant proportion, and second one is this one, law of conservation of mass. Do you remember what you have learned in these two statements? क्या था conservation of mass? Book मत देखो. Conservation of mass, this thing I have related with conservation of water. हाँ. If the mass cannot not be created or destroyed, बराबर है ना? कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जितना रिएक्टेंट के साइड में रहेगा सेम यू विल हैव ऑन द प्रोडक्ट साइड. इवन इन केस इफ इट इज some difference is there, then that difference it is maybe due to heat energy, but the total amount will remain the constant. And next one it was law of constant proportion. हाँ, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था. which was that example? Water from any source, it will have the same proportion, same amount of H as well as O. बराबर है ना? सेम ही रहेगा. कोई भी सोर्स लेकर आ जाओ, उसका सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, हिमालय से लाओ, कन्याकुमारी से लाओ, राजस्थान से लाओ, कहीं से भी लेकर आओ, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. एंड व्हेन वी आर सेइंग फॉर्मूला, देन इट कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 and 1. इतना क्लियर था ना? तो दिस ऑल टू लॉस वर इन सपोर्ट ऑफ डाल्टन atomic model. Now take down the example which is given in your book and at home find out same example is given or not. Textbook के अंदर, NCERT के अंदर. Write down carbon monoxide in bracket, write formula also and make habit of writing formulas. तो आपको easy करना. क्या हो गया बेटा? सर में दर्द हो रहा है? नहीं ना? नहीं, तू खाया, बहुत अच्छे से खा लिया है. अगर पता चला ना बीमार हो गई तो तू भी रेडी. हाँ, and if you are coming for PTM, I don't know how many of you will come next Sunday, मतलब coming Sunday. तो come with your parents.
कमिंग संडे। खाली पेरेंट्स का हमें आना है। हाँ, खाली पेरेंट्स का हम क्या करेंगे, हमको तुम्हारा फेस भी तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा ये ले, अरे लाइक दिस। हाँ, आ जाने वाली है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन राइट डाउन। और तुम्हारा बुक क्या बार बार चेंज हो रहा है? हाँ, ये फाइनल वाला बुक। Oh my God! After 2 or 3 months, final वाला book है. Next time, just remind me whether he is with same book or not. 5 books for 5 subjects. Yeah? मैथ्स और साइंस बस। प्रतीक्षा मैम आने लगे. हाँ, ठीक है अभी. है? प्रतीक्षा मैम बीच में गायब हो गई। नहीं गायब नहीं हो गए थे. She is having some health issue and वो अभी से नहीं है. She is facing, तो पहले तो मैं उनको नहीं पहचानती थी, but from March she is facing health issue. हाँ, नहीं इसी तरह लगा ना? लगा दो। रिमोट कहाँ पर है? एक सेकंड मेरे पास प्रतीक्षा है, की वो बात है कैसे आ गई? ये है क्या इस वाला? नहीं तो भी रहने दे चलो. बट गर्मी कहाँ हो रही? इट्स ओके. आई थिंक इट इज ऑन. देखो. ओके चलो राइट डाउन. कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड. हाउ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड? कार्बन मोनोऑक्साइड ना. कार्बन और ऑक्सीजन. क्या है उसमें भी इतना सोच रहे हो? Formed by carbon and oxygen. Put full stop and write. It was observed experimentally रुको मैम, that कार्बन एंड ऑक्सीजन। अरे कॉपी कर लेना तो भाई क्यों बंद करके रखी है बुक? नहीं रहने दो, थोड़ा उसका दिमाग ज्यादा चलेगा. भाई तो हो गया. Put full stop and then write. It was observed experimentally that. Now here is the important thing. ये आपको याद रखनी. If you are putting the same example, 3 gram of carbon combined with 4 gram of oxygen. स्टैचोमेट्री बोला था मैंने. इन ग्राम्स इट इज राइट. नंबर वाला नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है. ये देखो मैं बात ये कर रही हूँ. H2O plus O2 giving H2O 2. Okay, 4 here, 2 here. So this is the stoichiometry. Proportion. This we will not give in grams. दे रहे ग्राम में. It is only the number. बराबर. But whatever data is obtained from Dalton research, it is 3 gram of carbon and 4 gram of oxygen. Means it is by weight. Mass वाले concept में, because we are studying mass number वाला concept and not the atomic number. समझे अभी? चलो 3 gram of carbon and 4 gram of oxygen to form carbon monoxide. Okay, अभी क्या देखो, this sentence is very important. Here clearly it is given 3 gram of carbon, okay, 4 gram of oxygen and forming carbon monoxide. How many grams it is not mentioned. बराबर है ना. Normal our calculation it should be 4 plus 3 plus 4 it should be 7. Law of conservation भी हम लोग ले रहे तो 7 आना चाहिए. But here number is not mentioned कि भाई 7 है, 1 है, 2 है, कितना ग्राम. लॉ ऑफ मास, वो कौन सा, वो कंजर्वेशन वाला मास लॉ क्या था? हाँ क्या था वो? सेम अमाउंट ऑन बोथ द साइड, सेम मास ऑन बोथ द साइड. Here again I am repeating that addition value it is not given. It is just said carbon monoxide is obtained. Then write down. ये क्या हो गया? It is not like that. Sometimes it happens. ये होता है. वेरी बैड। Okay. हो गया मैंने. हाँ okay. Then write down. In other words, carbon combines with 4/3 कार्बन कम. आप लोग लिख नहीं रहे हो? लिखना तो है. नहीं इसके बाद कोई आंसर कार्बन मैम मैंने लिखा too much is too bad. देखो लिखा. गुड, मैं उनको बोल
अब ये बोली थी मैंने। In other word, carbon combined with 4/3 times its mass of oxygen. 4/3 बाद fraction. में ये लिख दो। 4/3 बोल भी नहीं है। अरे ओके ना, 4/3 mass times its mass of oxygen. बराबर है, राइट है? उनको बहुत नींद आती है, ठंडी लगी। हाँ अच्छा चलो, okay, so here as per the atomic masses, whatever experiment Dalton has done, it is 3 carbon, 4 oxygen. So in other word you can say 4/3 times of oxygen. One thing, huh? Again I am repeating, CO wala mass it is not given. Okay, so what is your work to find out whether it is given in your book or not? Because here it is clearly said कि ये all things these are going to support. Then write down. Now here we wait ना, हमने क्या लिखा है in grams. Okay, but we are doing all this for atomic mass. बराबर है ना, कैलकुलेशन इज फॉर एटॉमिक मास, तो उसके साथ में भी कुछ यूनिट चाहिए, ग्राम वाला यूनिट वी कैन नॉट टेक इट फर्दर, इतना ग्राम मास है उसका उतना ग्राम मास है, नो. सो द न्यू इन्वेंशन व्हिच वी आर यूजिंग नाउ, इट इज यूनिफिड, but in ancient time they were using AMU. AMU means atomic mass unit, ये लिखो वहाँ पे, AMU full form is atomic mass unit. Earlier it was AMU. If you want, write down full form. Atomic full form of AMU is atomic mass unit. But according to IUPAC, what is IUPAC? You know now? It is method of naming the organic compound. According to IUPAC, it is written as U. ये सब हटाना है यहाँ पर. U. That is unifid. UNIFIED, unifid mass as equal to mass of one carbon atom, equal to mass of one carbon atom. और ऐसे नहीं है कि even though it is recommended by IUPAC we are using unifid, still somewhere we are using AMU. What is full form of AMU? Atomic mass unit. Okay, आपको problems ऐसे मिलेंगे जिसमें AMU भी यूज किया है, but this unifid it is recommended by IUPAC. Okay, now अभी जाते हैं पीछे के जमाने में, फिर से इसमें स्टोरी टेलिंग बहुत हो रहा है, बहुत हद से ज्यादा हो रहा है. ओके, सो अभी पीछे के जमाने में फिर से जाते हैं और देखते हैं क्या चीजें. सो इन पीछे के जमाने में कार्बन का जो मास था, हाँ, इट वाज 1U, mass 1U, unifid 1 atomic unit, and oxygen it was 1.3 AMU. For carbon it is 1 AMU, or you can say U, and for oxygen 1.33 U. मैम फिर वो लोग लर्न करते थे ये सब, मुझे इतना पता कि नहीं, ये डिराइव करने का भी कोई फॉर्मूला है, डिराइव करने का भी फॉर्मूला है, लेकिन तुमको अभी डिराइव का कोई डेरिवेशन कहीं नहीं है. हाँ, तुमको सिर्फ लर्न कर रट्टा मारने का ही डेफिनेशन. अभी यहाँ पे देखो, फॉर कार्बन इट इज 1. हाँ, हमने जो यूनिफिड के आगे लिखा है ना, दिस वन इज अ मॉडर्न वन व्हिच वी आर यूजिंग. ओके, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1.33. But tell me, this is a whole number. It is easy for calculation. This thing, whether it is easy for calculation, decimal point हुआ ना. So for example, ये मैंने खुद observe किया एक क्लास में, मैंने एक नंबर दिया था with this decimal point and everything. One of the student he found the first value correct before decimal point, और decimal point के आगे उसने कुछ किया ही नहीं.
उसका वो डेसिमल पॉइंट वाला आंसर करेक्ट आ रहा था, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था, बट डेसिमल पॉइंट वाला नहीं, बाद वाला नहीं आ रहा था. तो I asked him why you did like this. He said it is difficult to go with the decimal point. He said that boy skipped that part. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने वैल्यू ऐसा किया 23.32, तो उसने ये सब वो कैलकुलेशन में लिया ही नहीं, इससे ही उसने कैलकुलेशन किया. इससे करोगे तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा. बराबर है, क्योंकि एडिशन अगर कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, जिससे कर रहे हो, मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसा करेंगे. नहीं, इतना हम लोग डिलीट नहीं करते. इट शुड बी एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ऐसे थोड़ी चलता है, तुम कुछ भी करोगे. एंड इफ इट इज नॉट होल नंबर ना, एट द एंड फाइनल आंसर यू कैन मेक इट होल नंबर. ये सब है हमारे पास में, रूल्स वगैरह, स्टैचूमेट्री, एवरीथिंग वी हैव. ओके, नाउ द मेन थिंग जो मुझे आपको बताना है, डूइंग कैलकुलेशन with the whole number, it is much more easy rather than going for fraction or decimal. Okay, तो उनको भी ये चीज जल्दी से रियलाइज हो गई. Okay, so they skip this thing, decimal point वाला they skip. Then they turn over oxygen atom. So mass were considered, how calculation of mass, that activity, that procedure, that experiment, for that purpose they use oxygen atom. ये वाला एटम है कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, विद द रीजन दैट ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके, सबके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट होता है. सो at to some extent it is also correct, oxygen react with almost everything, but again they face difficulty with this thing also. So do you want this all in writing? this story आपको चाहिए? I don't think this story is much important. Just remember, पहले जो वैल्यूज था they were in decimal, so that thing was completely ignored. Afterwards they use oxygen atom, say with the reason that, क्या था रीजन उसके लिए? Easy calculation and it react easily. Oxygen react with easily. But you note down this particular point. हाँ? ऑक्सीजन वाला पॉइंट, इसमें जो फिगर है वो लिख के लेना पड़ेगा आपको. देखो ये जो होल नंबर वाला है, here it is given, it is more convenient to have this number as a whole number. बराबर है ना, as a whole number or the near to the whole number as possible. Scientists initially took 1/16. What is this 1/16? 16 is what? अभी ये मत बताना आपको 16 किसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, ये नहीं पता है. हाँ, अभी उधर देखेंगे. सल्फर का क्या है ये, पर मैंने अभी तक सल्फर तो बोला ही नहीं है ना. मेरा एक्सप्लेनेशन में आई हैव नॉट आस्क्ड अबाउट सल्फर. और ये वैसे भी इट इज डिपेंडेड ऑन एटॉमिक नंबर और मास नंबर. देखो क्या बोल रहे हैं लड़कियां, दिस इज फॉर एटॉमिक नंबर. तो देखो कौन से एलिमेंट का मास नंबर इज 16. इट इज विजिबल देयर, मास नंबर 16 दिख रहा है. मिला मिला क्या? 15.999 दिखा? 15.999 यहाँ पे राइट साइड आफ्टर नाइट्रोजन, ग्रीन कलर आफ्टर नाइट्रोजन दिखा? नहीं, वो भी अभी भी PCNO 15.999. मैंने क्या बोला है? पीरियोडिक टेबल इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर्स आर रिटन हियर, ऊपर है. ये जो नीचे दिख रहा है ना पॉइंट वाला सब, दिस ऑल आर द होल मास नंबर. और एक चीज मैंने क्या बताई, you can convert that near about decimal point into whole number. So 1/16 it is 16 it is mass number of oxygen. पहले कहाँ से स्टार्ट हो गया था? First they have started with this masses, carbon and oxygen. Then they denied due to the fraction value of oxygen. बराबर है 1.33. उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया उन्होंने? They selected oxygen due to its reactivity. As we are studying atomic mass number, so the mass number of oxygen it is 15.999, which can be equal to 999 मतलब 16 ही बोलेंगे ना, 16. So write down this sentence. You write down. Initially, they took 1/16, 1 divided by 16, mass of the mass of an atom
of naturally occurring oxygen as a unit. Okay, तो जितना भी मास कैलकुलेट करते थे, फॉर एग्जांपल इफ दे आर कैलकुलेटिंग मास एज, आजकल है ना मैं बोर्ड पर बहुत नीट एंड क्लीन करने लगी हूँ. Okay, for example if they are getting mass 16 ही मैंने ले लिया, अभी 16 तो ऑक्सीजन का है, मुझे पता है 16 नहीं लेते. For example it is 4, so again the mass of this particular element it will be 4 into 16, जो वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा. इस एलिमेंट का मास, इस टाइप का कैलकुलेशन होने की. उधर मत देखो, पता बंद कर दे तो बार-बार एटॉमिक नंबर ही देखते बैठेंगे. अपना क्लास चालू करो. Then next one, now what is the reason for considering oxygen? Because it is Naturally occurring and very reactive. Oxygen it is reactive. You might be knowing ना, redox reaction करते हैं, gain and loss of oxygen. याद है ना, पढ़ा है ना? Oxidation it is gain of electron. जो corrosion होता है, rusting, it is only because of oxygen. Then another reason, first is this one, oxygen react with large number of element to form compounds. And second reason, okay, second reason, don't become lazy in writing, हाँ? नहीं तो ये भी बताना पड़ेगा फिर parents को. He is not writing. Check his notebooks after class. नहीं, ये देखो, मेरे पास जो भी parents आते हैं ना, मैं बच्चे का नाम पहले लिख के रखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा important. This atomic mass unit gave masses of most of the element as whole number. बराबर है? तो जो भी कुछ कैलकुलेशन आता था for most of the element, the final answer it was in whole number. क्योंकि यहाँ पे there was struggle 4/3. Again with carbon and oxygen 1 and 1.33, which was in decimal point. But with this one, with this particular calculation, most of the element were showing the whole number. अभी देखो ये sentence में हमारा next point का answer है. Most of the element. This means what? Still some elements were there which were not giving answer in the whole number. बराबर है? Which are not giving value in the whole number. So for that, how it can be considered? What will be the calculation? So from that, they finally come to the conclusion that instead of taking oxygen, instead of taking this thing or the decimal point वाला जो इसके पहले हमने किया था, we can take isotope of carbon. Isotope of carbon. Okay, carbon exists in 3 isotopic form. याद है या नहीं है? हाँ, एक रेडियो एक्टिव है उनमें से, लेकिन वो कौन कौन से है कार्बन के आइसोटोप्स? एक 12 है, एक 14 है, एंड वन मोर 12, 13, 14. बराबर ना? 12, 13, 14 with, and what is definition for isotope? There are more neutrons. ये मुझे ऐसे वाले टर्म में, मोर लेस वाले टर्म में मत बोलो. एटॉमिक नंबर और मास नंबर के टर्म में, और यू कैन tell me in terms of electron and proton. Atomic number stays the same, but the mass number keeps changing. Okay. And what is reason for that? Because the number of neutrons vary. Or in simple term, easy to remember, isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. And when we talk about mass number, it is sum of protons and neutrons. So जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन रहेंगे, but न्यूट्रॉन का number it will vary. Okay, so anyways you can eat like this or eat like this, it will go here in the system. तो जैसे आपको इजी लगेगा लर्न करने के लिए वैसा रखो. ये हमको यहाँ से करना है. हाँ, फ्रॉम कार्बन पेंसिल दो मुझे बेटा. पेंसिल, he is having 5 notebooks, not 1 pencil.
बाहर जा रही है देखो घर से बाहर निकलना है। अटेंड करना है When you have your term exam, Ma'am, 13 post exam science. term exam October. नहीं मैम अभी तो वही हमारी Ma'am, 13 September. Half year. This all topics are there. Ma'am, ये सिर्फ डायमंड थ्योरी तक आ रहा है और फर्स्ट और सेकंड। Yes, so calculus का कार्य होगा till that time we have done. So do one thing till that time मतलब one more lecture is हमारा स्कूल का खत्म हो जाएगा ये सब नहीं आ रहा है और फर्स्ट तो यू आर वेरी लकी स्टेटमेंट कर लो तो ये जी तो फिर अनन्या को भी जानती होगी ना, वो छोटी सी अच्छी है। हाँ वो मेरे ट्यूशन में आती है ना। हाँ बड़े आंखें हैं, अच्छी दिखती है।